Is it audible, guys? Very good morning, everyone. Is it audible? Yes, please. Video is not available. Oh, 1 minute. Now it is visible. So how many students are new here? So I think first name is my name, then Khyati Kumari. What is your branch? Nadeem, Priyasa Paul, Sonic, Kamini, Rakesh, Krishna, Somnath, Neha, and then Harshita or Yaswant, Sri Durga, Anmol, okay, and other students. Everyone, very good morning. This is Sanjay Rathi. So guys, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर पार्ट 3. तो अप टू दिस पॉइंट एनी डाउट? किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछिए. बट लेकिन इससे रिलेटेड जो मैंने 2 क्लास ली उसके पहले कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो. अभी आपको मैंने टाइम दिया है तो आप पूछिए, फिर उसके बाद हम लोग लेंगे ये. तो मैंने आपको पढ़ाया है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, and we have solved some questions. Okay sir, मॉड्यूल मिल गए मीन्स क्या बोल रहे हो वो मुझे समझ नहीं. अच्छा, कुछ दिक्कत है क्या? नेटवर्क ओपन हुआ या नहीं हुआ नेहा? सर नेटवर्क नहीं ओपन हो रहा है. और सेकंड चीज जो मैं पूछ रहा हूँ कि मॉड्यूल्स मिलेंगे क्या डिजिटली हमें? अच्छा, डिजिटल आप देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे किसी भी चीज उसके सब्जेक्ट के. और नेटवर्क भी नहीं हो पा रहा. रिकॉर्डेड है वो नहीं देख पा रहे हो आप? रिकॉर्डेड तो है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि जो प्रैक्टिस के लिए डिजिटली अगर जो हमें मॉड्यूल्स मिलते हैं. ओके, वो मॉड्यूल्स को आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो. ठीक, मैं बात करता हूँ क्या हो रहा है. लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखना, सबसे पहले ना जो भी क्लास कंटेंट और जो हो रहा है ना वो याद से कंप्लीट करना है. ठीक है, मतलब मैं आपको स्ट्रैटेजी वो तो मैं अभी बात करूंगा आफ्टर द क्लास. लेकिन एवरीवन फोकस, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके शॉर्ट नोट्स, फार्मूला नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि 2 लेक्चर चल रहे हैं, ईडीसी चल रहा है और आप लोगों का, कई लोगों का एनालॉग और मैथ्स चल रहा होगा, जो भी आप अटेंड कर रहे हो वो ध्यान देना. ओके देन सर, अभी मैं 1 मिनट आपके चैट देख लूँ इसको. हाँ तो नेहा, वेरी गुड मॉर्निंग. मॉड्यूल नहीं मिल रहा है. आई थिंक दे माइट गिव लाइव सेशन. यस, रिकॉर्डेड ओनली एनालॉग मैथ्स और ईडीसी मुझे दिख रहा है. हाँ, रिकॉर्डेड लाइव सेशन में दिख रहा है, क्योंकि अभी आप ईडीसी कर लो, एनालॉग कर लो, मैथ्स कर लो, यही बहुत है. हाँ, नेटवर्क का लेकिन जरूरी है, तो वो आपका टिक नहीं हुआ है नेहा, मैंने बात की थी. आप एक बार मैसेज कीजिएगा, अदरवाइज आई विल इन्फॉर्म देम कि सबको एक बार नेटवर्क, आप जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको अलाउ कर दो. राइट, नेटवर्क एज वेल एज डिजिटल बोथ, और नेटवर्क ओनली. क्या देखना है आपको ये बता दो मुझे, तो वो आपको अवेलेबल होगा. ओके, ठीक है, ठीक है. क्लास के बाद मैं बोलता हूँ सर को कि आप कर दे सबको. चलिए 1 मिनट में मैसेज ड्रॉप ही कर देता हूँ. फिर और एनी अदर डाउट? अरे इससे तुम तो टेक्निकल डाउट पूछते हो, मतलब यहाँ कोई ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे कोई डाउट है क्या?
बोल दिया, देखो मैंने लिख दिया है कि all the new students give them the access for network and digital. Okay, is it clear? ओके कामिनी, वो शायद सबको ही मिल जाएगा. ओके देन, अब आ जाओ. ये देखो इसका रिप्लाई भी आ गया है, एक मिनट दीजिएगा बस. Now guys, again very good morning. This is Analog Electronics Operational Amplifier Part 3. First of all, that is my introduction. Sanjay Rathi, 24 years of teaching experience. These are my ranks in Engineering Services Exam AIR 16 and AIR 21. I worked as Deputy Director in Ministry of Power and I have trained more than 1 lakh students for various competitive exams, especially for GATE, ISRO, DRDO, BARC, Engineering Services, Civil Services and so on. Okay, तो ये मेरी छोटी सी प्रोफाइल है. These are my area. और ये एक टेलीग्राम चैनल है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच. यू कैन ज्वाइन. यहाँ आपको बहुत सारे आने वाले टाइम में कंटेंट, आर्टिकल्स वगैरह दिखेंगे. एंड दिस इज माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल. ओके, यू कैन ज्वाइन. स्कैन कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा. सब टेबल चेयर पे बैठेंगे. अभी ये देखो थर्ड क्लास है, मैं कभी भी इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा. टेबल चेयर, ऑन टेबल चेयर यूज योर पेन, नोटबुक एंड कैलकुलेटर, वर्चुअल कैलकुलेटर. Regularity and punctuality is necessary. I am giving you the time to write chat or some you can ask your doubts. So please don't disturb during class. Okay? वैसे भी आप लोग नहीं करते हो, आप लोग बहुत ही ज्यादा शरीफ हो. मतलब बिल्कुल भी मुझे कंट्रोल नहीं करना पड़ रहा है. एक भी मतलब कोई भी उल्टा सीधा कमेंट्स नहीं लिखते. इतने भी शरीफ होने की जरूरत नहीं है. अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो बिना डरे डाउट पूछ सकते हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? लेकिन मेरे टॉपिक खत्म होने के बाद आई विल अलाउ यू कि भाई डाउट है तो आपको कुछ चीज लगता है तो मार्कर लेके बैठो ना, हाइलाइटर. ये वाला डाउट आया उसको सर्कल करके लिख दो. उसके बाद जस्ट जैसे ही खत्म हो उसको क्या बोलते हैं आप, उसको फॉरवर्ड कर दो. ठीक है, तो और ये आप देते रहिएगा. अभी आएगा, अभी सब कुछ हो रहा है काम, पर्दे के पीछे बहुत कुछ. नाउ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यस्टरडे वी हैव डिस्कस वन क्वेश्चन दैट इज इंपॉर्टेंट वन. नाउ रिमेंबर, inverting operational amplifier. Inverting means we are getting the 180 degree phase shift. We are getting 180 degree phase shift. This is the operational amplifier. Right, that was the question. Okay, and we have discussed this. Right, now what was the answer? Minus 120 gain. What is the feedback? Voltage shunt feedback. It is basically a inverting operational amplifier. Why? Because we are getting the phase shift negative 180 degree. Gain was minus 120 and highest value of the resistor used here is what? 10 kilo ohm. Okay, तो ये लास्ट में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था. इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? One minute. This was the question. Okay, now अब इसको देखो, एक और मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, तो आपको मेथड्स पता होना चाहिए. राइट, देखो दिस इज 10 किलो ओम. आई एम गिविंग यू द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देन वी विल सॉल्व टू मोर क्वेश्चन. 10 किलो ओम, दिस इज द 1 किलो ओम. 10 किलो ओम, 10 किलो ओम, 10 किलो ओम एंड 1 किलो ओम. तो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय डिफरेंट मेथड्स. लेकिन उससे पहले मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं आपको, फिर उसको सॉल्व करेंगे. देन
and that is the V naught, guys. Okay, this is ground. This is connected. This is R1, this is R2, this is R3. This is connected to the ground, connected to the V naught. Now find what is the gain of this. What is the gain of this? This is the 10 kilo ohm. This is the 10 kilo ohm, right? And this is 1 kilo ohm. Tell me, what is the gain of this amplifier? What is the gain of this amplifier? Ideal op amp. V naught by Vs. V naught by Vs. Tell me, what is the answer? Filling the blanks, numerical answer type question. This is the 10 kilo ohm, this is the 10 kilo ohm, this is the 1 kilo ohm. क्या होगा आंसर बोलो? अभी नॉन इन्वर्टिंग में एंटर नहीं किए, वी आर डीलिंग विद द इन्वर्टिंग ओनली. Inverting means it is connected to what? Vs. That's So Krishna Robotics is giving the answer -10. What about the other students? So we have the options A, वन मिनट है, 1 मिनट, आप ही का काम करवा रहे हैं, PDF भी अपलोड करवाना है टाइमली, तो आप लोग इसको बताओ.
So your voice is not audible. एक्चुअली वो उनसे बात किया हूँ आपके पीडीएफ अपलोड करने के लिए कि जस्ट आफ्टर द क्लास पीडीएफ अपलोड होना चाहिए। यस, तो मैंने बोला कि मुझे ही एक्सेस दे दो, मैं यहाँ पे कर दूंगा, तो वो बताएंगे मुझे प्रोसेस आफ्टर द क्लास। कोई बात नहीं, तो आ जाओ आप इधर। नाउ वॉच दिस, दिस इज द डायग्राम। क्या जनरल मिस्टेक क्या होती है वो देखना जरा। अब आपने कौन सी मिस्टेक की वो मुझे नहीं पता। पहले क्या करते हैं लोग इसको ना, जैसे ये देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, दिस इज द वी नॉट, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, दिस इज जीरो, दैट्स व्हाई दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दैट इज जीरो। तो क्या करेंगे, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और स्टूडेंट इसको ड्रॉ करेंगे वैसे वापस, और ये हो गया, ये हो गया, this is the V naught. What is connected between this point and that point? R2. And what is the connected between this point and R3? उनको क्या लगा कि this is connected between V naught and ground, this is connected between V naught and ground, so this is the V naught. V naught and ground R2 is connected, V naught and ground R3 is connected, and that's why these two are in parallel. And the voltage gain is simple, this will become RF, and that's why the V naught by Vs will become minus R2 parallel with R3 upon what? R1. That is nothing but minus 5 upon 1, minus 5. Because 10 parallel with 10 is what? 5. So this is the minus 5. That is the answer, but this is wrong. But this is wrong. Why? Now watch this. When the two resistors are connected in parallel, always remember, when the two resistors are connected in parallel, what is the meaning of the parallel resistance? These are the two resistors are connected in parallel, and let both are equal. Both are equal. Guys, let this is the current 10 ampere. What is the current through the R1 and what is the current through the R2? Current is equally divided into two parts, 5 ampere and 5 ampere. That is called current division rule, half of. Suppose these two resistors are connected in parallel, but they have the different values, R1 and R2, and this is the current I, then we can find the I1 with the help of the current division rule. It will become I1 upon R1 plus R2. If you want the current through the R1, it is multiplied with the R2, and this is called current division rule. Yes, यही है ना, अगर दो रजिस्टर पैरेलल में है, then it is the distribution of the current. This is called current division rule. Now the first thing is here, right? This is the current. Watch what we are doing. We are redrawing the diagram, and this is the R2 and R3 are connected in parallel. So tell me guys, if these are connected in parallel, then this current should divide into what? I1 and I2. I1 and I2 according to the current division rule. But here, this is the current I, right? What is the current enter into the operational amplifier? 0. The same current will pass through the I2, R2. There is no current division rule, guys. No current division rule. The same current will pass through the R2, and there is no division between R2 and R3. So remember, always remember, this is physical ground, and this is what? Virtual ground. This is physical ground, this is virtual ground. These 2 points are different, and that's why we can't connect R2 parallel to R3. This is wrong. R2 parallel to R3, because there is no current division rule. Parallel means always there should be the current division rule applicable hona chahiye. So the current division rule is not applicable. That's why, what is the correct solution for this? Correct solution for this diagram is, if you want to redraw the diagram, watch it carefully. This is the resistor R1. This is the resistor. This is actually RF. This is actually RF, and this is R3,
This is the R3. This is nothing but RL, 10 kilo ohm. This is the V0, and this is the VS. This is the actual diagram. Now the current will flow I, same current will become IF. This is 0, virtual ground concept. This is 0, 0. And you can say the gain is minus RF by R1. That is nothing but minus R2 by R1. So what is the gain? Minus 10. What is the gain? Minus 10. That is the answer for this question. Answer जो है minus 10 है. ये गलत है. ये वाला गलत है. अब minus 1 कैसे आ गया आप लोग का पता नहीं. This is the minus 5 is wrong. Minus 1 is also wrong. Minus 10 is the answer. हाँ आपका सही है भाई. आपको गिफ्ट पहुंच चुका होगा आपके घर में. क्यों कृष्णा? देखो डोर पे कुछ आया क्या? अब ये देखो, अब ऐसा बोलेंगे ना तो दूसरे दिन ये बोलेंगे सर मेरा गिफ्ट तो आया नहीं, आप वापस भेजिए. देखो यार ये हो गया. अब ये आ गया -10. अब देखो इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है यार, ऐसे ही बना लेते इसको. देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, कोई नो नीड टू रीड्रॉ द डायग्राम, नो नीड टू मेक इट व्हाट इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड सो ऑन. सिंपली अप्लाई द KCL. Operational amplifier means KCL and virtual short concept. This is 0, this is 0. Let the current is I, or you can apply the KCL at this point. KCL at this point. So what is the KCL at this point? Okay. 0 minus Vs upon R1. 0 minus Vs upon R1. 0 minus V0 because this voltage is V0. 0 minus V0 upon R2 is equal to 0. What is the current enter into the op-amp? 0. This is the outgoing current. This is the outgoing current. Sum of the outgoing current is equal to 0. So it will give you the value minus R2 by R1 into Vs. So what is the gain? V0 by Vs is equal to minus R2 by R1 minus 10 by 1. That is minus 10. Phase shift is negative. That's what is called inverting operational amplifier. Is it clear guys? Everyone? क्या redraw करने की जरूरत है क्या? No need to redraw. Simple apply the virtual short concept. Apply the what? KCL at this point and you will get the answer. Now this gain, what is the beauty of this? This gain is independent of RL. Suppose we are connecting the RL here. This is the RL. This gain is independent of the RL. It depends upon the RF. It depends upon the R1 only. If suppose I am going to change this RL, everyone tell me, if I am going to change this RL, is there any change? Is there any change guys? Bolo. No change because it is independent of RL. यही तो खास बात है. It is a basically when the output voltage is independent of RL, we can say it is a voltage controlled voltage source. So what is the meaning of the voltage controlled voltage source? I am changing the value of this voltage. This value will change, but when I am going to change the value of the RL, there is no change. This is called purely voltage controlled voltage source. This voltage is controlled by this voltage. Okay. हाँ क्या हुआ अंकुर? अनमोल, व्हाट इज योर डाउट? नॉट इज क्लियर टू यू? जो हमारा जैसे वोल्टेज ड्रॉप का कॉन्सेप्ट लगाए हम पी नोड, हमारा जो करंट जा रहा है R1 से R2 जा रहा है और R3 तक जा रहा है हमारा करंट. R3 तक नहीं जा रहा है. अब मैं आपको बताता हूँ R3 नहीं जा रहा है. बता दीजिए R3 तक क्यों नहीं जा रहा है? नहीं पहले तो ये समझो कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है. इज इट क्लियर? इट इज नॉट गोइंग टू डिवाइड हियर क्योंकि हमारे पास डिवाइड तो समझ में आ गया कि डिवाइड नहीं होगा, करंट सीधा ही जाएगा R1 से R2 तक. अच्छा हाँ आप बोल रहे हो. अच्छा ठीक है, ये तो पहले बताओ, ये क्लियर हुआ कि डिवाइड नहीं होगा? ये सर ये तो क्लियर है. अब आप बोल रहे हो कि सर अब ये जा रहा है तो जाते जाते R3 में क्यों नहीं गया? यू आर आस्किंग लाइक दैट ना? यस सर. सर ये आई आया, ये इधर गया आई, और सेम आई कहां से जाना चाहिए? R3 से. यस मैं आंसर दे दूं सर? अब मैं बताता हूँ, रुक जाइए 5 मिनट रुको. अभी देखो क्वेश्चन दूसरा अब आ रहा है, वो समझना जरा. ये क्वेश्चन गेन क्लियर हुआ क्या एवरीवन? दिस गेन इज क्लियर टू यू?
Simple. Gain means V naught by Vs. KCL, we get the relation between V naught by Vs. Now, just to understand that concept, I am giving you the different question. Why the current? देखिए अब ये आया सेम, this was the diagram. This is RL, this is V naught, this is RF, let it is the 10 kilo ohm. This is the R1, let it is 1 kilo ohm. Okay, connect 1 volt battery here. Let 1 volt battery is connected here, negative, positive. Now, it is a ideal op amp. It is a ideal op amp. Ideal op amp means its input resistance is 0, AV is infinite. AV is infinite, RI is infinite. So what is the current enter from this point? 0. Current enter into the operational amplifier from the input side is 0. And the virtual short concept is valid. So Vp is equal to Vn is equal to what? 0. Vp is equal to Vn is equal to 0. This is called virtual ground process. Okay, up to this point everything is fine. So what is the question here? Question is, the current I will flow, then RF, that same current will flow through the RF. Why? Because the current enter into the op amp is 0. But at this point, IF is coming. But remember guys, here in this branch there is a current. In this branch there will be current. This is the output of what? This. And what is the IL? So you have to find the value of I. This is the question. Find I. It may be positive, it may be negative. If you are getting the negative value, means current is flowing in opposite direction. If you are getting the positive value, current is flowing in this direction. So this is the question. Now, you have to find the value of I. This is nothing is given. IF is also not given. Simply this is the question. 1 volt, R1 is given, RF is given, RL is given, 10 kilo ohm RL is given. This is connected to ground, ideal op amp is given, and you have to find the value of I. Now, with this question, Anmol, you will get your answer. Okay then. Now, क्या नदीम क्या बोल रहे, बताओ जरा आंसर क्या होगा, मैं बताता हूँ. सर एक टर्मिनल ग्राउंड है तो दूसरा वर्चुअल ग्राउंड, देन अप्लाई द नोडल, यही कॉन्सेप्ट. यस यस, एक टर्मिनल ग्राउंड है तो दूसरे को ग्राउंड करो एंड अप्लाई द नोडल एनालिसिस, और व्हाट दैट इज कॉल्ड केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ. बिल्कुल, सम ऑफ द आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0 बन जाता है. तो ये भी वही, इसमें भी वही करना है, इसमें भी वही करना है. देखो जरा, तो इफ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, if you want the I, then first of all virtual short concept, this is 0, that is 0. Then first find the V naught. So you can directly find the V naught or you can apply the KCL. 0 minus Vs upon R1 plus 0 minus V naught upon RF is equal to 0. You will get the V naught is equal to minus RF by R1 into Vs. So that is the direct, it is an inverting operational amplifier. What is the gain? Minus RF by R1 into Vs. So you will get the direct answer, or otherwise apply the nodal at this point. What is the voltage at this point? 0. So you will get minus RF by R1 Vs. So what is the minus RF? Minus 10 by 1 into 1, minus 10 volt. You will get this is the minus 10 volt. Okay. Now, if it is the minus 10 volt, guys, suppose I am giving that this is the load current. I am getting one current here, IF, and this is I. Just to find the I can apply the KCL or nodal at this point. If I am going to apply the nodal at this point, nodal or KCL at V naught. So what is the incoming current? I.
What is the incoming current? IF. What is the outgoing current? IL. Okay, no problem. So what is the I? I will become IF minus IL. Okay. First, IF. IF is equal to what? I. This is the let I dash. Let this is the I dash because you will confuse with this I. So let this is I dash. IF is equal to I dash. So what is the I dash? Vs minus 0 by 1. Vs minus 0 by R1. So that is the 1 divided by 1 milliampere. To this branch 1 milliampere, same current will flow through the RF. So what is the value of the IF? 1 milliampere. This IF is 1 milliampere. What is the value of the IL? IL is nothing but V0 upon RL. V0 upon RL. V0 upon RL. What is the V0? Minus 10 upon 10. It will become minus 1 milliampere. What is the meaning of the minus 1 milliampere? It is not flowing in the downward direction. It is flowing in upward direction. 1 milliampere. So in the formula we have used to put the value minus. Minus minus it will become plus. So tell me guys, what is the value of the I0? Or what is the value of the I, everyone? What is the value of the I? This is 1 minus of minus 1. It will become 2 milliampere. 1 minute. 1 minute, 1 minute. What is the formula? That is use wrong formula. Okay, sorry. This is I is equal to IL minus IF. What is the value of the IL? Minus 1. What is the value of IF? Minus 2 milliampere. Minus 2 milliampere. So this current is, no doubt we are taking the IL downward, but actually the current is moving upward. This current is incoming, this current is incoming. So what is the current in this direction? 2 milliampere. But the direction is given I. That's why we are getting the negative value. तो देखो नेगेटिव वैल्यू आ रही है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? कैसे हुआ? अरे एक बात बताओ, यहां से कोई करंट आ रहा है 1 मिली एम्पियर. व्हाट इज द करंट एंटर इनटू द ऑप एम्प नदीम? व्हाट इज द करंट एंटर इनटू द ऑपरेशनल एम्पलीफायर? 0. When the current enter into the operational amplifier, the same current will flow from this side to this side, and that's why IF will become I dash, 1 milliampere. And what is the current here? 1 milliampere. So what is the 1 milliampere? 1 milliampere. What is the current enter into the op amp? 2 milliampere. Okay, this point is clear. Okay then. Always आइडियल ऑप एम्प है ना, आइडियल ऑप एम्प. आइडियल ऑप एम्प तो व्हाट इज द करंट एंटर इनटू द ऑप एम्प? 0. देन थोड़ा और एक्सप्लेन करूं मैं इसको. देखो जरा, नो डाउट इट इज आस्क्ड आई, but what is the current here? 1 milliampere. Simple. Vs 1 minus 0 by 1 milliampere. Same current will flow 1 milliampere. This current is independent of the RF. What is the current moving in upward direction? 1 milliampere. This is 1, this is 1. So what is the current in this direction? Inside 2 milliampere. So from the diagram you can say what is the value of the I? Minus 2 milliampere. Finished. Minus 2 milliampere. Because this value is negative, current will flow from ground to towards what? Higher voltage to lower voltage. The current will flow in this direction, 1 milliampere. So that is the answer, minus 2 milliampere. सबको क्लियर है? एक बार जितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं एक बार हाँ बोल दीजिए, तब आगे बढ़े. यस, दिस इज क्लियर. तो ये देखो ना कामिनी, यहां से जो करंट आ रहा है 1 मिलीएम्पियर, ऊपर से भी करंट आ रहा है, अंदर कितना जाएगा? 2 मिलीएम्पियर. केसीएल सेटिस्फाई करवाना है. अब पॉइंट देखो जरा, मैं इसको बस एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं. देखिएगा जरा मैंने क्या चेंज किया. आरएल की वैल्यू, मेक द आरएल इज इक्वल टू 1 किलो ओम.
Make the RL is equal to 1 kilo ohm. One kilo ohm. I'm not going to change this value, that value, and so on. What is the value of the I? What will be the value of I? Same. KCL incoming I, incoming IF, outgoing IL. I is equal to IL minus IF. I is equal to V naught upon RL minus I dash. V naught is minus 10 divided by 1. This time it is 1 and this is minus 1. What is the current, guys, everyone? What is the current? Minus 11 milliampere. So this time the current is 1 milliampere. In upward direction the current is 10 milliampere. This is minus 10 volt. So what is the current enter into the operational amplifier? Actually it is the minus 11, it is the 11 inside. What is the I? Minus 11. Answer is minus 11 milliampere. Now tell me, when I am changing the value of RL, is there any change in the V naught? When I am changing the value of RL, is there any change in V naught? Everyone focus on the board and tell me. No change. Why? Because V naught is independent of RL. It depends upon the RF, R1 and Vs. So we are not changing the value of Vs, R1 and RF. Voltage gain will remain same. Input voltage is same. That's why output voltage is also same. But when we are changing the value of RL, current through RL increases. We are decreasing the RL. When we are decreasing the RL, current will increase. But the output voltage will remain same. Output voltage will remain same. Okay. So what is the logic behind that? This is a very, very important one. Watch this. This is the diagram. आराम से समझना, कोई डाउट है तो पूछ लेना. This is the diagram. Now this is our part. This is the Vs. It is fixed at 1 volt. R1 is fixed 1 kilo ohm. This is fixed 10 kilo ohm. And we are getting the output. This is fixed minus RF Vs. That is what? Minus 10 volt. Okay. This is all are fixed. Now we are connecting a load here. External load. User will connect. User. Not loser. Why user? I am talking about the user. है ना, loser मत बोल देना, user. एक बात बताएं, हम लोग यहाँ पे जो भी चीज डिजाइन कर रहे हैं ना, वो यूजर के लिए डिजाइन कर रहे हैं. वी आर द डिजाइनर, वी आर द इंजीनियर्स, वी आर डिजाइनिंग द सर्किट्स फॉर द यूजर, और ऑल द डिवाइस शुड बी व्हाट? यूजर फ्रेंडली. तो टू थिंग्स आर यूज्ड बाय द यूजर. वन इज व्हाट? आरएल, वन इज व्हाट? वीएस. नाउ टेल मी गाइस, व्हाट इज द करंट गिवन बाय द वीएस? This is 0, this is 0. So what is the current given by the Vs? Everyone, what is the current given by the Vs? R1. That is 1 milliampere. Okay. This is the current given by the battery. Right. We are changing the value of RL. First of all, it is the 10 kilo ohm. So what is the current required here? 1 milliampere. And this battery will give the 1 ampere current, milliampere, and this is also 1 milliampere. Now, what is the current given by this operational amplifier? Actually, it is in negative direction because it is inverting operational amplifier. So because of inverting, there is a 180 degree phase shift. So we are getting this type of diagram. To change the polarity of the battery, inside battery, why? Because it is a 180 degree phase shift. This is the R0. That is negligible. Ideally, it is 0. This is the AVVI. Now, because of this battery, the current direction of the current is inside. When we are taking the RL is equal to 10 kilo ohm, what is the current given by the battery?
What was the current given by the battery? 2 milliampere. When we are changing the RL to 1 kilo ohm, what is the current given by this operational amplifier? Tell me, what is the current given? 11 milliampere. If suppose you are going to reduce again further, RL is equal to 0.1 kilo ohm, it will give you what? 101 milliampere. 101 milliampere. In every case, RL is variable, but what about the output voltage? It will remain constant. What about the current given by the Vs? Constant. No loading effect. We are changing the load, but the current given by the Vs will remain constant. The voltage, output voltage will remain constant. And the extra current through the RL is not the responsibility of this battery. This is the responsibility of this active devices that is called operational amplifier. ये concept clear हुआ? This concept is clear? Okay, so this is called there is no loading effect, guys. तो ये है, तो इसीलिए आप याद रखें, क्वेश्चन बन गया 2 नंबर का क्वेश्चन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आई? इन फर्स्ट केस द आंसर इज 2 मिली एम्पियर. इट इज सेकंड केस 11 मिली. एक्चुअली आई इज मूविंग इनसाइड, बट आई इट इज दिस इज, तो इट इज -2 -11 -101 एंड सो ऑन. अब एक इसका आप बोलोगे सर व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूज? देखो फॉर एग्जांपल, पहले इसको समझ लो, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए. सर मुझे एक डाउट है. हाँ बोलो सर. जैसे हमने वी नोट पे नोडल लगाया, जो हम मान के चलो एज अ सिर्फ नेटवर्क के हिसाब से हमारे पास एक सर्किट बनाया हमने जो आर रेजिस्टेंस दे रहा है और एक आर एल है. वी नोट पे हमने नोडल लगा दिया और आई करंट उस पे आ रहा है. सर वो एक बार आप समझाएंगे? नहीं, कहाँ बोल रहे हो? ये इस नोट पे मेरे को एक बार सर वी नोट पे V0 पे सेम सर, बिल्कुल सेम सर्किट बना दे अगर जो हम नेटवर्क की तरह. यहाँ पर V0 ना? जी सर. या यू आर टॉकिंग अबाउट द V0. ओके, हमने एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस RL है और आई करंट इससे आ रहा है. अब मुझे V0 और VS का रिलेशन निकालना है. V0 और VS का? जी. तो एक बार आप वो समझा दीजिए. तो V0 और VS का विदाउट यू आर रिमूविंग द ऑपरेशनल एम्पलीफायर. Yes sir. If you are going to remove the operational amplifier, then this is the question belongs to what network? Yes, नेटवर्क को yes. बिलोंग करेगा ना ये तो. Yes sir. तो फिर तो वो नेटवर्क हट गया तो एम्पलीफायर का रोल ही हट गया. तो वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट भी हटा दोगे आप, यही बोल रहे हो ना आप? नहीं सर, वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट रहेगा. मतलब ऐसा नहीं, हमारे पास BS है, R प्लस RF है सीरीज में. V नोट हमने उस पे नोट लगाई दिया. जी सर. ये सीरीज में बोल रहे हो ना? जी सर. लेकिन एक बात, हाँ अब मैं समझ गया आपकी बात. ये देखो ये होती है सिली मिस्टेक. कोई बात नहीं है, मिस्टेक है मतलब आपको कंफ्यूजन आ रहा है. देखो मैंने बोला ये R1 है, ये RF है, राइट? ये आ गया आपका RL, मतलब यहां से कनेक्ट कर दो. ये आ गया V0, ये RL है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर से कनेक्टेड है. ये यहाँ से आई करंट जा रहा है बस सर. हाँ ये सर. ठीक है, ओके. और दिस इज द RF, दिस इज व्हाट R1 और दिस इज द RL. ओके. Yes sir. अब BS और V नोट same current is flowing from this point I, same current is moving here, है ना? They are connected in series, right? Yes. Yes sir. Yes. अब आप बताओ, आप बोलोगे ये VS है और यहाँ पर V0 है. If all the 3 resistors are connected in what series? For example, all the 3 resistors are connected in what series? My dear friend, same current, for example, this is the 1 milliampere. What is the network here? Network is let it is a 1 volt, or we are not having any circuit here. Simply we can voltage divide. This is the voltage division rule. Why? Because it is a voltage division rule. What is the voltage at this point? Tell me. What is the voltage at this point? In a network, we have to find the voltage at this point with the help of voltage division or any other things. Are you getting my point?
तो आपको तो ये वोल्टेज ही नहीं पता, अब वोल्टेज आप निकालोगे तो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवीजन रूल फाइंड द वोल्टेज एट दिस पॉइंट, देन यू कैन फाइंड द आई डैश. इन दैट केस no doubt this I dash are same, but we have no idea about this voltage. So when we are connecting this network to operational amplifier, we have the idea about this voltage. What is the voltage at this point everyone? जब आपने ऑप एम्प से कनेक्ट किया तो इस पॉइंट का वोल्टेज कितना था? जीरो. वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट. और नेटवर्क होगा तो यही हमको नहीं पता चलेगा ये वोल्टेज कितना है, फिर वो नेटवर्क के कॉन्सेप्ट से निकालोगे. यही पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज है भाई, यही तो एम्पलीफायर है, वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट. दैट्स व्हाई वी हैव द आइडिया अबाउट दिस वोल्टेज. और इसी जीरो के कारण वी आर गेटिंग द रिलेशन बिटवीन वी नॉट एंड व्हाट वीएस. ओके सर. अदरवाइज द सिग्नल विल नॉट गोइंग टू एम्पलीफाई. क्लियर? जी सर. अरे सब माइक बंद करो. सर. हाँ बोलिए सर, ये जो आपने लास्ट कॉन्सेप्ट बताया, ये जो अनमोल ने पूछा था, तो इसमें जो बीएस से मतलब जो सर्किट आपने विदाउट एम्पलीफायर जो बनाया है, बीएस से जो हमारा बीएस इज इक्वल टू 1 वोल्ट है, तो यहाँ पे जब करंट आएगी, मतलब जो वोल्टेज आएगा बीएन, यहाँ पे भी तो 1 ही वोल्ट होगा ना, मतलब क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है रेजिस्टेंस, तो इसलिए पूछते हैं. अरे हम नेटवर्क में क्यों जा रहे हैं? व्हाई वी आर एंटरिंग इनटू द नेटवर्क? अगर यहाँ 1 वोल्ट है, करंट फ्लो कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ जो भी ड्रॉप आएगा वो 1 वोल्ट से कम आएगा ना. अगर आप कोई दूसरी बैटरी नहीं लगा रहे हो, जब तक आप दूसरी बैटरी नहीं लगा रहे हो, तो हाउ आई कैन से व्हाट इज द वोल्टेज एट दिस पॉइंट? मुझे वोल्टेज निकालने के लिए यहाँ भी तो सर्किट चाहिए या नहीं चाहिए? एवरीवन टेल मी. ये तो ऐसा कंप्लीट करो ऐसे सर्किट को. अब जैसे सर्किट कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पर केसीएल लगाओ टू फाइंड द वोल्टेज एट दिस पॉइंट, यहाँ पे केसीएल लगाओ टू फाइंड द वोल्टेज ऑफ दिस पॉइंट. तो दिस इज द क्वेश्चन बिलोंग्स टू एनालॉग और नेटवर्क. टेल मी. अगर मैं ये ऐसा क्वेश्चन देता हूं, सर देयर इज कंपल्शन कि यहाँ मतलब बीएन पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहाँ पे बी आउट पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, और ये जो 10 वोल्ट है यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा. कहाँ पर ड्रॉप होगा? अब होगा ही ना. एक बात, नो, अगर ऐसा सर्किट है तो मुझे बताओ, यहाँ पे वोल्टेज निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? टेल मी. यहाँ वोल्टेज निकाल सकते हो एवरीवन? यस और नो? निकाल सकते हो ना. केसीएल लगाओ ना, वीएन बाई 1. इसको छोड़ो, करंट तो सेम जाएगा, लेकिन केसीएल लगाओ. वीएन माइनस 1 अपॉन R1 प्लस वीएन माइनस वी नॉट अपॉन RF. फिनिश. एक केसीएल हो गया. दूसरा केसीएल यहाँ लगाओ. वी नॉट माइनस वीएन अपॉन RF प्लस वी नॉट माइनस 10 अपॉन R3 plus V naught minus 0 upon RL. How many unknowns? 2 unknowns, Vn and V naught. How many equations? 2 equations. Can you find the Vn and everyone? Okay. Can you find the Vn and V naught everyone? समझ में आया? तनवीर क्या था नाम उनका? अनमोल. Okay सर. तो ये नेटवर्क है एक्चुअली. तो ये नेटवर्क में हमको Vn निकालना पड़ेगा. लेकिन what is the beauty of the operational amplifier? You have the idea about the Vn. We are using the property of the op amp. According to virtual short concept, what is the value of the Vn? 0. This is the known value. Okay then. अच्छा, मैं जो बोल रहा था ये बता रहा हूँ. अब एक एम्पलीफायर का क्या काम है? देखो, ये तो हो गया, चलो ठीक है, क्वेश्चन कोई बुरा नहीं है, सही है, नो प्रॉब्लम. वही लोगों को समझ में आता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करता है. ये पहले शुरुआत में मुझे भी ऐसे डाउट्स रहते थे. अब जैसे मैंने बुलाया भाई, एम्पलीफायर लगा दिया, ये देखो ये आ गया पूरा ऑप एम्प सब अंदर बॉक्स में कैद हो गया, और यहाँ से एक RL आया, और ये मैं हूँ. ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट. ये मैं आया, आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टेकिंग द योर क्लासेस. ठीक है, मैंने कुछ बोला, मुझे बोला यार तुम बोलो कुछ, तो बोले मैं करंट दे रहा हूँ 1 मिली एम्पियर. राइट. यहाँ पर अभी एक ही बच्चा है. अब मैं आपको भाई बोझ बोल दूं तो बुरा तो नहीं लगेगा आपको? बोझ मतलब हिंदी में लोड को बोलते हैं बोझ, बोझा, भार. आप भार हो, आप लोड हो, बुरा मत मानना, मजाक कर रहा हूँ. यू आर द लोड एंड योर वैल्यू इज 10 किलो ओम. 1 स्टूडेंट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 10 किलो ओम. एक स्टूडेंट आया, कौन है आज? कौन बनना चाहेगा भाई? बताओ. लोड कोई भी बन जाओ, एक्सपेरिमेंट हो रहा है. ठीक है, ये एक लोड है. राइट. 1 मिली एम्पियर एंड आई एम गेटिंग हियर द 10 वोल्ट fixed voltage, and what is the current given by this battery is 1 milliampere, and the remaining current is given by the operational amplifier, that is what? 2 milliampere. Now
just I am connecting the another student. Another student is connected in parallel. Connected in what? Parallel. When I am connecting the another student, it is also equivalent to 10 kilo ohm. What is the equivalent resistor? Everyone tell me. The equivalent resistor will become 5 kilo ohm. And now it requires more current. It requires more current. And that's why initially the current is what? 1 milliampere. This is also require 1 milliampere. Why? Because the voltage is same. Okay, but what is the current given by me? Fixed 1 milliampere. Again, one student joined here, or 10 students join. When the 10 students join, what is the value of the current? 10 milliampere is required. What is the current given by me? 1 milliampere. 100 students will join. 100 students join, 100 milliampere is required. What is the current given by me, guys? Tell me. What is the current given by me? What is the current given by the VS source? 1 milliampere. Means there is no loading effect. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे 100 ज्वाइन करे, 1000 ज्वाइन करे, 10,000 ज्वाइन करे. That is not my responsibility. I'm going to take the class. I have to give some energy. I'm giving the 1 milliampere, and that is the duty of what? Amplifier. The remaining current is given by the amplifier, and at the same time, everywhere where you are in Chandigarh or Bhopal or what Odisha or what Goa or so on, सबको वोल्टेज सेम दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देयर इज नो वोल्टेज फ्लक्चुएशन, एवरीथिंग इज फाइन. लेकिन करंट की रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रही है. यहां पर रोल आता है किसका? एम्पलीफायर का. नॉट दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर एवरीवन? दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, एंड दैट इज द रोल ऑफ व्हाट एम्पलीफायर. आप बोलोगे ना सर वेरिएबल लोड कैसे होता है? दिस in this way we are getting the variable loads, 10 kilo ohm, 1 kilo ohm, 0.1 kilo ohm and so on. चलिए यहां पर किसी को डाउट नहीं है तो आगे बढ़ें. अब हो गया. दिस इज ऑल अबाउट दिस सर्किट. तो ये आपका क्वेश्चन हो गया. नाउ आ जाते हैं भाई, हमारे पास इतनी कहानी कहाँ पहुंच गए थे, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं हम लोग. ये क्वेश्चन बनाना था. सेकेंड मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन गाइस. व्हाट इज द सेकेंड मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन? वही जो मैंने बताया है आपको, वही कॉन्सेप्ट यहां आएगा. देखो, now already we have solved with the help of what? KCL 0 0 Vx. Yesterday I have solved and we got the answer -120. देखो, when this is the current I, the same current I, what is the current enter into the op amp? 0. This is 0, this is 0. Same current will flow here. Then this current, some part of this is I1 here, this is I2 here. Right? Same current here. At this point, this current is divided into two parts, I1 and I2, and finally, this is the circuit. But we can't apply the current division rule here. Why? We can't apply the current division rule at this point because this is the 1 kilo ohm, this is the 10 kilo ohm. But the voltage at this point is 0 and voltage at this point is what? V0. This voltage is same. This voltage is same, but this voltage is what? Different. This and this voltage are different. That's why we can't apply the current division rule. So what is the basic concept behind the current division rule? These two are connected in parallel. This voltage and this voltage should be same. If these voltages are same, these voltages are same, then we can say these two resistors are connected in parallel and then we can apply the current division rule. ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में नहीं हैं. क्यों? क्योंकि इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम नहीं है. पैरेलल में दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होना चाहिए. देन वी कैन से दीस टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. एट द सेम टाइम नोड भी सेम होना चाहिए. देखो ये नोड सेम है. तो वी कैन अप्लाई द करंट डिवीजन हियर, बट हियर वी कांट अप्लाई द करंट डिवीजन रूल. तो हियर वी कांट अप्लाई द करंट डिवीजन रूल. ओके, चलो अपोजिट आते हैं. अपोजिट आ जाओ. अच्छा, उधर से नहीं लगा सकते क्या? इधर से लगा सकते हैं क्या? ये देखो जरा. चलो यहां से एक करंट जा रहा है आई. दिस इज द करंट आई. नाउ टेल मी गाइस, दिस इज द Vx.
This is the current. I1 will flow here, I2 will flow here. I1 will flow here, I2 will flow here. What is this Vx? What is this 0? What is this Vx? What is this 0? Same voltages. Now tell me, what about these two resistors? They are connected in parallel, yes or no? Yes or no? This is the Vn. This is the 10 kilo ohm. This is the ground. This is the 1 kilo ohm. And the current is I here. Yes. This voltage and this voltage. This voltage and this voltage same. And these two are connected in what? Parallel. So we can use the current division rule for this. So if this current is I can find the I2. What is the I2 is equal to I upon 1 plus 10. If you want to calculate the current through the 10 kilo ohm, multiply with the 1 kilo ohm. So it will become I by 11. So what is the current flowing here? I by 11. Now what is the current enter into the operational amplifier? 0. So same I by 11 is here. I by 11 is here. Okay. अब आप बोलोगे सर इससे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? देखो इतना इजी है ना, तुरंत सॉल्व हो जाएगा. If you want to find the gain, then guys, this is the 1 kilo ohm. This is the 10 kilo ohm. This is the 10 kilo ohm. Now write down the V0. From this point to this point, you can find the V0. It is 0. So V0 is equal to 10 times of I plus 10 times of I by 11. So you will get V0 is equal to 120 I by 11. 120 I by 11. Now guys, 0 minus Vs by R is equal to I by 11. 0 minus Vs by R, that is 1 kilo ohm, is equal to I by 11. So you can say what is the I by 11 is equal to minus Vs. I by 11 is equal to minus Vs. This will become minus 120 Vs. Tell me guys, what is the V0 by Vs? What is the V0 by Vs, everyone? What is the V0 by Vs? आप देखोगे अरे सर आंसर तो सेम आ गया. V0 by Vs is equal to what? minus 120. तो आप उधर से करंट डिवीजन रूल अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन यहां से आप जा रहे हो बिकॉज दिस इज द सेम नोड, सेम वोल्टेज, यू कैन अप्लाई द करंट डिवीजन रूल. So this is the I, this will become I by 11, same current will flow, or you can write down the KVL from this side to this side and you can find the value. That is the minus 120. That is another method to solve this question. अब बताओ मुझे, आप बता सकते हो कि बताना है या नहीं बताना है कॉन्सेप्ट इतना. यू कैन से. अगर आप बोलोगे कि नहीं सर पहला ही मेथड ठीक है, अब ज़्यादा मेथड या कुछ नहीं, तो आई कैन स्किप ऑल दिस टाइप ऑफ थ्योरी. जैसा बोलो आप लोग. थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग करना है तो. पेपर का लेवल बढ़ेगा. कोविड के चक्कर में इजी हो गया था पेपर. इस बार आपका IIT JEE नीट सबका लेवल बढ़ गया है. देखा है आपने? यस और नो, टेल मी. नीट का आपने पेपर सुना है? फिजिक्स का लेवल एकदम से बढ़ा दिया. JEE का लेवल एकदम बढ़ गया था. और अभी आपका गेट लेवल, वो कोविड के चक्कर में, कोविड में ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई है करके सब इजी कर दिया था. अब हो गया, कोविड खत्म हो गया, तो आप कोविड खत्म हो गया, थोड़ा सा लेवल पे थोड़ा डाउट आता है, डाउट पूछिए. आई एम हियर टू गिव आंसर फॉर ऑल योर क्वेश्चंस. लेकिन समझ नहीं आ रहा है तो क्लास छोड़ दोगे या कुछ करोगे तो इट्स अप टू यू. मैं तो यहाँ हूँ डाउट बताने के लिए. कोई भी चीज समझ नहीं आ रही पूछिए. तो मैंने को देखो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था. व्हाट वाज द आंसर? minus 120. कौन सा मेथड था? KCL लगाओ यहाँ. 2 times KCL. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. एंड दैट इज द KCL. वहां लगाया था हमने KCL और Vx पे, एंड फाइनली वी गॉट द आंसर minus 120 Vs. Same here. This is the concept of what? Current division rule. Divide the current I, two parts, I1 and I2. I2 will become I by 11. The same current will flow here. Get the relation between Vs and I, and then get the relation between V0 and I. That is the KVL. This is the equation number 1. This is the equation number 2. This is the equation number 3. Right? Replace the I by 11 by minus Vs.
एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, इधर से नहीं कर सकते ना करंट डिवीजन, क्योंकि यहां से जो करंट जाएगा सेम करंट यहां से जाएगा, लेकिन जब वहां से आ रहे हो राइट टू लेफ्ट, यू कैन यूज द करंट डिवीजन रूल। अब आते हैं भाई, ये तो हो गया। अब आपको कोई आई थिंक नो डाउट दिस इज ऑल अबाउट द इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। काफी डिस्कस कर लिया हमने इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द सेकंड मोड, दैट इज व्हाट, नॉन इन्वर्टिंग मोड। नॉन इन्वर्टिंग मोड, ओके। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डील्ड विद द इन्वर्टिंग मोड, नाउ नॉन इन्वर्टिंग मोड, देन थर्ड वन इज द डिफरेंशियल मोड। Non-inverting mode, this is the non-inverting operational amplifier. Here we are giving input to the positive terminal. The feedback is, again there is a negative feedback, this is the RF and R1, plus and minus. Non-inverting mode, we are getting the gain 1 plus RF by R1. What is the phase shift? 0. Positive, and that's why it is called non-inverting. Okay, the feedback mechanism is voltage series feedback. This feedback mechanism we will discuss in feedback chapter, so don't worry about that. इन्वर्टिंग में फीडबैक मैकेनिज्म था वोल्टेज शंट, नॉन इन्वर्टिंग में फीडबैक मैकेनिज्म है वोल्टेज सीरीज फीडबैक। ओके, वोल्टेज सीरीज फीडबैक। नाउ इसको थोड़ा हमको सीधा करना पड़ेगा, तभी हमको समझ में आएगा। इसको आप सीधा अगर कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सीधा क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब समझ सकते हैं कि एक चीज में इन्वर्टिंग ऑप एम्प में कितने क्वेश्चन बन गए। अब नाउ नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दिस इज द नेगेटिव, this is feedback resistor RF, this is R1. Now this time this is ground, here we are connecting the VS, this is the non-inverting operational amplifier. Then first ideal op amp, VP is equal to VN is equal to VS. This is called virtual short. Virtual short, guys. Virtual short is, this is the VP and VN are equal. Now apply the KCL at this point or nodal. What is the current enter into the op amp? 0. So you can apply the nodal at VN, KCL at VN. So it will become VS minus 0 because it is VS by R1 plus VS minus V0 upon RF is equal to 0, because this is VS, VS minus V0 upon RF. Then you can arrange it, this is the VS into RF plus VS into R1 minus V0 into R1 is equal to what? 0. You can take the R1 RF LCM, it will become 0. Then it is the RF plus R1 is equal to V0 R1. So what is the V0 is equal to? This is divided 1 plus RF by R1 into what? VS. What is the gain of the system? That is called the closed loop gain, or this is overall gain, AVS. 1 plus RF by R1. What is the phase shift? 0 degree, and that's why it's called non-inverting operational amplifier. Simple use of virtual short. Okay. Simple use of virtual short. बोलो किसी को कोई डाउट इसमें? नदीम, अब बोल रहे थे ना ऑलवेज यूज करना. यस, दिस इज क्लियर. Same concept we have used. Virtual short concept, this voltage same. Apply the KCL, you will get the answer. हर बार आपको यही करना है.
This time the voltage is applied to what? Positive terminal, and that's why we are getting the positive answer. 1 plus Rf by R1. Okay then. This is a ideal operational amplifier, R1 Rf. Okay, virtual short concept, you will get the 1 plus Rf by R1. Now, for ideal operational amplifier, what is the input resistance seen? Ideal op amp. Remember guys, for ideal operational amplifier, the input resistance seen by the Vs. What is the input resistance seen by the Vs? Already I have said the input resistance seen is given by the value of the battery divided by the current given by the battery. So what is the current given? Current is 0. That's why for ideal op amp, so what is the input resistance seen by the Vs? Infinite. What is the current enter into the op amp? 0. So this is the ideal condition. What is the current given by the battery? Nothing. 0. 0 current. So this is a ideal situation where the input resistance seen by the Vs is 0. But in case of inverting operational amplifier, that was the R1. But in case of the non-inverting op amp, that is infinite. Nothing. No current is given by this battery. So remember, this is the ideal situation, non-inverting amplifier. Third case is practical situation. What is the exact solution for this? What is the exact solution for this? If you want the exact or practical situation, so practical op amp, AV is not infinity. It has some finite value, 50, 100, 200. Then this is Vp, this is Vn, this is Vi, plus, minus, this is AV. You can find the V0 is equal to AV into Vi. AV is positive, that's why Vi is Vp minus Vn. AV is greater than 0. We are assuming that AV is greater than 0, and that's why we are writing the Vi is equal to Vp minus Vn. What is the Vp? Vs. What is the Vn? You can use the voltage division rule. This is the Vn, this is the V0, this is the Rf, this is the R1. This is the Rf, this is the R1, this is the Vn. This terminal is connected to ground. What is the current enter into the op amp? 0. According to voltage division rule, what is the Vn in terms of V0? Very, very simple. R1 upon R1 plus Rf into what? V0. R1 upon R1 plus Rf into V0. And what is the R1 upon R1 plus Rf, guys? Already we have the idea. We have assuming. Let R1 upon R1 plus Rf is equal to beta. In previous theory, we have discussed that this is beta. So Vn will become beta times of V0. Beta times of V0. Fifth. Now put the second and fifth in first. Just remember, we are assuming the beta. So it will become V0 is equal to AV. This is the Vp. What is the Vp? Vs. What is the Vn? Beta V0. Beta V0. Now V0 will become AVVS minus AV beta V0. V0 one side, and you will get the V0 by Vs.
V0 one side. This is the equation number 6. Then from the 6, V0 1 plus beta AV. Right side it will become 1 plus beta AV, that is equal to AV Vs. So what is the V0 by Vs? That is called overall gain, closed loop gain, that is equal to V0 by Vs is equal to open loop gain upon 1 plus beta AV. 1 plus beta AV. This is the formula. This is the exact formula, guys, exact formula. Beta is equal to R1 upon R1 plus RF. Here the beta is equal to R1 plus RF. तो जब भी आपको अगर आपको गेन दे, if it is given that the gain is 50 or 100 or 200, use this formula. AV is the open loop gain, positive value. AV is the positive value. Beta you can find R1 upon R1 plus RF right here, and you will get the exact answer. Exact answer for this question. Now, last condition, if suppose you have no idea about the virtual short, मान लो आप virtual short concept के बारे में कुछ जानते ही नहीं, no idea about the virtual short concept, can you solve like this? Tell me. मान लो आपको virtual short ही नहीं पता है कि VP is equal to VN लेना होता है, तो क्या आप ऐसे solve कर सकते हो? मुझे बताओ. Yes or no? No idea about the virtual short, then we can't put the VP is equal to VN, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है. तब क्या करोगे? तब भाई ऐसे ही बनाओ. Assume the practical op amp, let the gain is finite, find the VI, simple logic, VP and VN, multiply, arrange it, find the answer. Okay. Now AV is infinite, so put the limit infinite. What we are doing? Divide the numerator and denominator by AV, so it will become 1 upon AV. Limit AV tends to infinity, 1 upon 1 by AV plus beta. Because AV is infinite, this term will become 0, and what is the answer? Approximate answer is 1 by beta. Approximate answer is 1 by beta. And we are removing the 1 from the denominator. 1 from the denominator. Or we can say the beta AV is very, very greater than 1. Again, you will get the same answer. Or if the beta AV is very, very, very greater than 1, then from that equation, AVS will become AV upon beta AV. AV cancel, and you will get the answer 1 by beta. So we have the two options. Put the limit AV tends to infinite, or beta AV is very, very greater than 1. In both the cases, you will get the answer 1 by beta. What is the 1 by beta? R1 plus RF upon R1. You will get the same answer. Same answer. Tell me, this is the exact answer or approximate? Last one. Exact or approximation? क्यों हर्षिता, क्या है ये? Exact answer or approximation? Approximate answer. It is overestimated. Why? Because denominator, we have reduced the denominator, overall result increases. So after approximation, this AVS, magnitude of AVS is overestimated. 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 तो होता है, ऐसा नहीं है कि you can solve with the virtual short only. You can find the exact answer, then apply the condition, you will get the same answer. But with the help of virtual short, it will become very, very easy to solve the question. हुआ कि नहीं हुआ solve? देखो ना, इतना कौन निकालेगा भाई? डायरेक्ट लगाओ virtual short, ये देखो एक ही स्टेप में आंसर आ गया. Within one step you can get the answer, and that's why this concept is very, very important. Virtual short. तो बोलोगे सर ये क्या कर रहा है? उसको वेरीफाई कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है. देखो कि इससे भी आंसर आता है, सेम आंसर.
पूरे स्टेप से लिखे हुए हैं और यहाँ से यहाँ आ जाओ, उसको सॉल्व करो और फिर गेट द आंसर। कोई भी डाउट है तो पूछिए भाई। इक्वेशन नंबर 5, then let this is the equation number 6, this is the 7th, this is 8th, right, this is 9th beta, then limit, you will get the answer, and that is the 10th one. Okay. It is a overestimated result, guys. This is a very important diagram, non-inverting op-amp. For non-inverting op-amp, remember 2 or 3 things जिसको हम लोग verify करेंगे. For non-inverting operational amplifier, the first thing is exact gain is AV upon 1 plus beta AV. AV upon 1 plus beta AV. What is the beta? R1 upon R1 plus RF. Second, when we are finding the feedback mechanism, remember this this will discuss in what feedback mechanism, voltage series feedback. In this feedback, there are 4 types of feedback: voltage series, voltage shunt, current series, current shunt. So in this feedback, this is the beauty of this feedback, input resistance increases after feedback. For example, any value of the input resistance is given for op-amp, then it will increase. So what is the new value of the input resistance seen by the Vs? It is given by Ri, that is the input resistance of the open loop op-amp, 1 plus beta AV. Because of this feedback, input resistance increases. So no need to verify it. This is just the feedback mein karenge. So what is the exact value of the Rin? So after feedback, this is more than the Ri of the open loop operational amplifier. This is the Ri. R0 decreases. So what is the after feedback? What is the R0? R0, that is the open loop operational amplifier upon 1 plus beta AV. So if it is divided, if it is reduced, it is divided. If it is increased, it is multiplied. And after feedback, gain decreases, and that's why it is divided by 1 plus beta AV. Okay. Then tell me guys, if the gain decreases by 1 plus beta AV, what about the bandwidth? Since the gain bandwidth product is constant, so what about the bandwidth? If the gain is reduced by 1 plus beta AV, so what about the bandwidth after feedback? Bandwidth after feedback is increased by 1 plus beta AV before feedback. तो जहां जहां F लगा हुआ है, that is nothing but RIF. With feedback, with feedback, with feedback. This is also known as AVF, with feedback or closed loop gain. This is the open loop gain upon 1 plus beta AV. It is reduced, it is increased, it is reduced, bandwidth increase. And the gain bandwidth product will remain constant. Right? So 1 plus beta AV times it will increase, guys. तो जब आपका फीडबैक टोपोलॉजी आएगा ना तो पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे. बट इतने में यू कैन सॉल्व ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प. द क्वेश्चन बेस्ड ऑन नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प. ये कर लेना, पूरा फॉर्मूला पढ़ लो. 1 plus beta AV. ओके. Okay, this is the non-inverting op-amp. I am dealing with the practical condition. Then what is the ideal condition? Already we have discussed 1 plus RF by R1. Ideal condition give approximate value. Yes, ideal condition will always give the approximate value. Yes, Somnath.
आइडियल कंडीशन विल गिव ऑलवेज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अरे एक बात बताओ, जिंदगी में कुछ आइडियल है क्या? बताओ तुमको सोमनाथ गेट में कितने नंबर चाहिए, बोलो, मांगो जरा, कितने मांग रहे हो? ओ यार गुवाहाटी वाले कम नहीं, अभी जो गुवाहाटी वाले आईआईटी गुवाहाटी वाले पेपर बनाएंगे 100 नंबर। एक बात बताओ सोमनाथ, तुमको 100 नंबर मिलेगा? यस और नो? आर यू गोइंग टू गेट द 100 आउट ऑफ 100? नो। तो बते केस कर दो तुम आईआईटी पर, जब मुझे 100 नंबर मिल ही नहीं रहा है तो बना क्यों रहे हो पेपर, है कि नहीं? लेकिन वो क्या डील कर रहा है, आइडियल सिचुएशन। इफ आई एम गोइंग टू गिव द 3 आवर्स, बच्चे संजय राठी सर का असाइनमेंट पूरा कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, सब कुछ आइडियल कंडीशन में कर रहे होंगे। बच्चे मशीन है, थकते ही नहीं है, उनका दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे, योगा भी कर रहे होंगे। तो बताओ अब कितना मिलेगा अगर इतना सब कुछ करोगे? तो बताइए सोमनाथ, मान लीजिए आप पूरे 100 आउट ऑफ 100 हो गया ना आइडियल कंडीशन। कौन कौन ला रहा है भाई, ईमानदारी से बोलो, इतने भयंकर, इतने ईमानदार, इतने अच्छे कौन है भाई यहाँ बताओ, एक आध जन कौन है ऐसा? मैं तो नहीं मानता सौमिक, मुझे तो ट्रस्ट नहीं है। अरे मैं खुद इंजीनियर हूं, मैं कैसे मान लूं कि आप एकदम मतलब योगा भी करोगे, एक्सरसाइज भी करोगे, मोबाइल भी नहीं देखोगे, रील्स भी नहीं देखोगे, मतलब इतने शरीफ? अरे भाई साहब, फिर तो आप इंजीनियर ही नहीं हो, फिर मुझे डाउट हो जाएगा कि आप इंजीनियर हो या नहीं हो। तो ला सकते हैं, मतलब एकदम ज्यादा, मतलब एक समझ लो, मैं एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, थोड़ा बिंदास होना भी जरूरी है। क्या है कि ना, जिंदगी में इतनी ठोकर पड़ेगी ना कि आप सिंपल पढ़ाई के दम पे तो सरवाइव भी नहीं कर पाओगे, और खासकर इंडिया में तो सब टाइप के खुरापात आनी चाहिए। यस और नो, टेल मी, है ना? यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग, आप किसी का बिगाड़ो मत, लेकिन अपने आप का बिगाड़ने भी तो मत दो भाई। आपको कोई मतलब, आप किसी का बुरा मत करो, लेकिन कोई दूसरा आपका बुरा करके चला जाएगा तो क्या फायदा? बहुत मतलब सीखना पड़ेगा हमको, ये तो बहुत सही बात है कि हमको सीखना पड़ेगा। पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेना पड़ेगा और चीजों को टैकल भी करना पड़ेगा। हमको हमेशा ही अच्छा करना है, लेकिन किसी को बुरा करने का मौका मत देना। तो देखो ये है आइडियल, ये है प्रैक्टिकल सिचुएशन। अंडर आइडियल कंडीशन वी आर एज्यूमिंग दैट there is no drop across this, zero drop, and that's why we are getting the finite output without any input। ये ऐसा लॉजिक लगाते हैं। ओके, अब फाइनली देखो वो जो आंसर है ना, इसमें एग्जैक्ट आंसर और अप्रोक्सीमेट आंसर में अंतर है। तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर? आपको मैंने बताया था वहां भी, परसेंटेज एरर मींस अप्रोक्सीमेट आंसर इज ओवर एस्टिमेटेड। तो अप्रोक्सीमेट माइनस एग्जैक्ट अपॉन अप्रॉक्स exact into 100%. तो what is the approximate 1 by beta? What is the approximate AV upon 1 plus beta AV upon AV upon 1 plus beta AV into 100%? Solve it, you will get the answer. Same answer, just like inverting operational amplifier. So what is the percentage error? This one. So AV increases, error decreases, or AV is infinite. What is the error? Zero. Khatam. If the AV is infinity, means no problem. Ideal condition, practical condition, all are same. There is no error. AV less value of the error. If you are going to solve the question with virtual sort, you will get more error. Okay. तो कभी भी 50 100 देना तो एग्जैक्ट वैल्यू यूज करना, और याद रखिएगा फीडबैक मैकेनिज्म इज वोल्टेज सीरीज फीडबैक। दैट्स व्हाई दीज फॉर्मूला आर इंपॉर्टेंट। इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस मल्टीप्लाइड विद दिस, आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस डिवाइडेड बाय दैट, बैंडविड्थ इंक्रीजेस, गेन डिक्रीजेस, गेन डिक्रीजेस। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए नॉन इन्वर्टिंग पर भी, है या नहीं है।
मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं नॉन इन्वर्टिंग पे, दैट्स वाई इन्वर्टिंग पे, सॉरी। तो आपको ना स्पेशली या तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर, दैट इज़ अ वेरी वेरी टॉपिक इज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। 1 मिनट। अब आंसर बता दीजिएगा बस। बोलिए जरा। Find the input resistance, output resistance, and V naught by Vs. V naught by Vs. Also find bandwidth for closed loop system for this particular diagram. देखो, if it is given for open loop op-amp AV or AOL, this is called open loop gain 100, means it is a practical operational amplifier. RI is also given 10 to the power 6. It is not infinite. What is our gain? Right, 1 minute. चलिए बताइए, what is the answer, everyone?
सभी लोग आंसर बताओ भाई, कामिनी क्या है आंसर? अरे फॉर्मूला तो पूरा डिस्कस कर लिया हूं मैं। गेन विल डिक्रीज, फाइंड द बीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बीटा एवरीवन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बीटा? Anmol, 1 by 10. Good. Beta is 1 by 10. Then find the D, that is called desensitivity factor, beta 1 plus beta AV. Just to find the input resistance, output resistance V0, Vs. First, always find the beta in this question. Right. Right. ठीक. Then this is called desensitivity, D. बस ऐसा वर्ड है, बाद में हम लोग यूज करेंगे. बीटा एवी. फाइंड द बीटा एवी, ओपन लूप गेन बीटा. तो ये कितना हो गया भाई? 1 plus 100 by 11. 1 plus the gain is 100 and 1 by 11, so it will become by 11. Okay, no problem. Now what is the gain after feedback? AV upon 1 plus beta AV. This is the gain for this closed loop system, exact gain. So exact gain will become 100 upon this value by 11. So it will become 1100 by what? 111. कितना आ रहा है आंसर? 1100 divided by 111. 9.9 आ रहा है ना? कितना आ रहा है यार आंसर? ओहो, 100 by 11 कैसे आया? एवी की वैल्यू कितनी? ओह सॉरी 110 आएगा यार, ये गलत हो गया यहाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक. बीटा तो 10 है ना, 1 by बीटा, सॉरी 11. Desensitivity factor, this is called 1 plus beta AV is what? 11. Sorry for that. AV is 100 divided by 11. That is the gain. ये आ रहा है सबका 100 by 11. कोई, मैं भी सोच रहा हूँ क्या हो गया. 9.09. राइट, 9.09. ओके. अब बताओ, अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करता तो क्या आंसर आता? अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करता तो मेरा आंसर आता 1 plus RF by R1. और एग्जैक्ट कितना आ रहा है? 9.09. तो व्हाट इज द एरर? What is the error here? You can find the error approximately 10. Exact is this one. You can find the error. You can find the error. %10.01%. क्लियर है एरर? तो और अदरवाइज यू कैन फाइंड द एरर बाय 1 upon AV बीटा. 100%. 1 upon AV 100.
beta 10. Directly you can find the error here. Directly you can find the error. In both the cases we are getting the same error. Okay. This is about the error. Now second thing, what is asked? Input resistance. Remember, it is a voltage series feedback. That's why the input resistance increases. If the input resistance increases, then what is the value? Formula. Ten to the power 6 into 11. 11 mega ohm. It is increased by the 11. यही आया सबका 11 mega ohm everyone. Yes, desensitivity multiply कर दो. Output resistance, right? या तो डैश बोल लो या ROF after feedback. It is given by R0 upon 1 plus beta AV. It is given 100 upon 11 ohm. 100 upon 11 ohm. Because open loop 100 it is given. 100 it is given. Now the gain bandwidth product is 10 to the power 6 is given. So what is the bandwidth? Bandwidth is gain bandwidth product upon gain. What is the gain bandwidth product? 10 to the power 6. What is the gain? 9.09. You can find the bandwidth. Point 109. This is the bandwidth. Okay. हो गया ना फॉर्मूला बेस? ये ऐसा ही आता है. डोंट वरी अबाउट दैट. ये पता ही नहीं है लोगों को, वो बना ही नहीं पाते हैं. तो याद रखिएगा, दिस इज द क्वेश्चन. ओके, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, पढ़ लेना. कोई ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे अब इसके. मैं आपको बस एक न्यूमेरिकल देना चाहता हूँ. नॉन इन्वर्टिंग पे अनदर न्यूमेरिकल. Already we have solved this type of question on inverting, non-inverting. Ideal op-amp, find the value of I. This is 1 volt, 1 kilo ohm, 10 kilo ohm. कर लोगे? फाइंड एवरीवन. आज ही मैंने सिखाया है आपको. क्यों भाई? अनमोल, कामिनी, प्रियासा, पॉल, हर्षिता, नेहा, कर लोगे इसे सॉल्व? यस, तो कर लेना, असाइनमेंट है. What is the current given by the operation for variable load? One for 10 kilo ohm, one for 1 kilo ohm. Okay, an ideal op-amp. So this is about the fixed gain and so on.
feedback mechanism, everything which is discussed. सर सेकेंड लोड क्या था? क्या? RL 1 किलो, RL इज इक्वल टू 1 किलो, RL इज इक्वल टू 10 किलो। अरे कल बनाना है तुम्हारा तो ठीक है, पहले भी बताओगे तो कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा आपको। इन्वर्टिंग समर, नॉन नहीं इन्वर्टिंग चाहिए नहीं गिफ्ट तो वैसे भी नहीं दे रहे थे। अच्छा सुनो, अब जो है जैसे अपन लोगों ने इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग बनाया, ठीक है, यस और नो? अरे बनाया कि नहीं बनाया? इतने देर से 2 दिन से वही मेहनत कर रहे हैं। वी हैव डील्ड विद द इन्वर्टिंग ऑप एम्प एंड नॉन इन्वर्टिंग, एवरीवन यस? यस, ठीक है भाई, बना लिए सर बहुत सारा इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग। अब क्या कहना चाहते हो आप? मैं बता रहा था कुछ और, मुझे चाहिए यार ये ब्लैंक पेज, वो भी मतलब हेडिंग के साथ चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या। आप बोलते हो कि सर इधर उधर कहाँ घूमते रहते हो आप, मतलब कुछ राज की बातें मैं खोल ही देता हूँ। एक बात बताओ, ये इसमें कुछ खास दिख रहा है? इसमें क्या है इस पेज में, बताइए इस पेज में क्या खास है? 2 चीजें, एक तो यहाँ पे G फॉर जी लिखा हुआ है, गिग्स फॉर गिग्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेशनल एम्पलीफायर पार्ट 3, राइट? अब मैं यहाँ पर अगर नया पेज लेता हूँ ना, तो नया पेज देखो कुछ नहीं आता, ब्लैंक आ गया। अब ब्लैंक आ गया तो पीडीएफ में ना वो मिसिंग हो जाता है, तो मुझे ना ब्लैंक पेज ढूंढना पड़ता है कि मेरा ब्लैंक पेज कहाँ गायब हो गया। ऐसे मैंने कुछ कुछ ब्लैंक पेज बीच में डाले हुए रहते हैं। चलो ये बहुत बड़े राज की बात नहीं थी, जस्ट मजाक कर रहा था मैं, ठीक है, छोटी सी बात है। जब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ या तो कुछ यही आना चाहिए ना डुप्लीकेट होके, ये भी होता है डुप्लीकेट। अब मैं चाहूँ तो इसको अभी डुप्लीकेट कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी प्रैक्टिस में नहीं है। यंग लड़के बहुत जल्दी सीख जाते हैं, तो मैं 1 मिनट और लूंगा। अभी थोड़े दिन पहले जब मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया था ना, तो जाना था आईटी, तो बीच में गैप था 20 दिन का, ठीक। तो उसने बोला मेरे को ना टीचिंग में ना थोड़ा सा पढ़ाना है, मतलब रिकॉर्ड करना है। हालांकि जाओ कर लो रिकॉर्ड। मैं आया, मैंने स्मार्ट बोर्ड का तरीका बता दिया, इसको ऐसे ऑन करना, उसको कैमरा ऐसे ऑन करना, ये वो हो गया। उसके बाद ये स्मार्ट बोर्ड है, यही है, यही नोट था। भाई साहब यंग जनरेशन, मतलब आप लोगों को ना प्रणाम है, इतने सारे नए फीचर्स निकाल दी जिसको मैं यूज ही नहीं करता हूं इसमें, राइट? मतलब मुझे पता ही नहीं, अगर मैं फीचर यूज करने जाऊंगा तो मैं पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन इतने सारे हैं भाई। यही पीपीटी बन गया, यही पीडीएफ बन गया, यही पूरे डायग्राम्स भी आ गए, सब कुछ आ गया। लेकिन जब तक वो मतलब मैं सीखता सीखता तब तक तो कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो अभी मैं वापस आएगी तब बताना पड़ेगा भाई क्या क्या है, बता दो। मुझे लग रहा है मुझे सीखना है वापस, इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर। आप लोगों का जो एक्सपोजर है ना बहुत ज्यादा है, तो अच्छे से काम करो, सब होगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या होता है इन केस ऑफ इन्वर्टिंग ऑप एम्प और इन केस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। In case of inverting as well as in case of non-inverting, we have the choice. What is the choice? We can choose the ideal op amp or we can choose the non-ideal op amp. This is the RF, this is the R1, right? Now we want to get the gain and so on. तो क्या करते हैं, इसमें choice है हमारे पास। एक ऐसा में टेबल बनाना आप लोग, दिस इज द इन्वर्टिंग, दैट इज द नॉन इन्वर्टिंग। तो टेबल में क्या लिखना, पहले तो लिखना व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट गेन माइनस आर एफ बाई आर वन, 1 प्लस आर एफ बाई आर वन। फिर उसके बाद इनपुट रेजिस्टेंस R1, इनपुट रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। देन प्रैक्टिकल कंडीशन वोल्टेज शंट फीडबैक, वोल्टेज सीरीज फीडबैक। प्रैक्टिकल कंडीशन व्हाट वाज द गेन AV बीटा अपॉन 1 प्लस AV बीटा इनटू माइनस आर एफ बाई आर वन। What is the practical gain? AV upon 1 plus beta AV. Okay, and then by using the Miller's theorem, we have find the input resistance, write down the formula for that. By voltage series feedback concept, write down the formula for RI, R naught, AV, bandwidth and so on. तो ये पूरा आपका comparatively table बन जाएगी। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो देखो, यहाँ पर ना in this inverting or non-inverting we have the choice. Actually, we have the operational amplifier with the gain 10 to the power 6. This is the highest gain available. Okay.
या फिर आपके पास ऐसा ऑपएम है कि आपका गेन है 500, या फिर ऐसा ऑपएम है जिसमें गेन है 200, या कई बार गेन है 50। तो जैसे जैसे गेन इंक्रीज हो रहा है ना, इफ यू आर इंक्रीजिंग द गेन, द कॉस्ट ऑफ द एम्पलीफायर विल इंक्रीज एज वेल एज साइज ऑफ द एम्पलीफायर विल इंक्रीज। तो if the suppose the low gain is required, so why we are wasting our money, or why we are wasting our space? So we will use what 50, or we will use the 200, or we will use the 500, and so on. So my dear friend, when I am using the 50, 200 or 500, I have to solve the question by using what? Exact analysis. But when I am using the gain 10 to the power 6, then I can assume it what? Infinite, and this is called ideal op-amp. तो इसमें दोनों चॉइस है, आप हाईएस्ट गेन वाला लो या अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ले लो। इसमें आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों होता है। सेम कहानी इसमें भी है, आइडियल एंड व्हाट? प्रैक्टिकल। आइडियल एंड व्हाट? प्रैक्टिकल ऑप-एम्प, जस्ट टू सेव द मनी, जस्ट टू सेव द स्पेस, वी आर यूजिंग दिस। अब जैसे होता है ना, अब मुझे यहां से यहाँ 1 किलोमीटर तक जाना है, तो भाई साइकिल से चल दे यार, पेट्रोल काहे को जला रहे हो। फिर 5 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर, तो बाइक ले जाओ यार। और बताओ, एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो आपके घर में कार है, तो किस में जाओगे? टेल मी। मतलब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, बाइक, देन व्हाट? बाइसिकल, देन बाइक, देन व्हाट? कार। तो वैसे ही यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। दिस इज द केस। वो केस टू केस डिफर करता है, इसलिए मैंने तुमको एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट दोनों बताया। अब मैं और क्या बोलना चाहता हूँ, now we have the number of applications like what? Inverting summer, non-inverting summer, integrator, differentiator, filters, differential amplifier, and so on, voltage to current converter, current to voltage converter. Just to design all these circuit, we must choose a op-amp with maximum gain available. For example, the maximum gain available is 10 to the power 6. We have to choose with the op-amp with the maximum gain. Then we can design the circuit like voltage to current converter, current to voltage converter, inverting op-amp, filters, integrator, differentiator, logarithmic amplifier. तो जब आप ये सब एप्लीकेशन के लिए ये op-amp यूज कर रहे हो, तो बताइए कौन सी एनालिसिस करेंगे, एग्जैक्ट की अप्रोक्सीमेट एनालिसिस? We are not have the choice to use the 50 or 100 or 200. We have that choice in case of inverting and non-inverting op-amp only. अब आप इसमें हमेशा approximate analysis use करोगे, good one, approximate. So that's why if you are going to use the approximate, which concept is valid? Virtual short with negative feedback. In positive feedback, virtual short concept is not valid. तो अब मैं जितने भी एप्लीकेशंस बताऊंगा, कोई एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट करने की जरूरत नहीं है, ओनली अप्रोक्सीमेट। ओके, वो लिखे चाहे ना लिखे, बताऊं चाहे ना बताऊं, बाय डिफॉल्ट इट इज अ आइडियल op-amp और op-amp विद मैक्सिमम गेन। तो वी आर एज्यूमिंग दैट गेन इज नियरली इक्वल टू व्हाट? इंफिनिटी। ओके, तो हमारे पास चॉइस ही नहीं, हमको वही op-amp चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, if you want to design the inverting summer, this is the inverting summer, guys. Summer means output is the sum of the input V1, V2, V3, or output is the proportional to sum of the inputs V1 to what? Vn. This is called inverting summer, right? So what is the concept of the inverting summer? Watch this. Again, ideal op-amp, always ideal op-amp, ideal operational amplifier. If this is the ideal operational amplifier, what is the concept? Virtual short concept is valid. So what is the virtual short concept? This is 0, this is 0. अब देखिए, तो current enter into the op-amp is 0. So this is the I1, this is the I2, this is the I3, IN. This become IF. Very simple logic. IF is equal to I1 plus I2 plus I3 plus IN. What is the IF? 0 minus V out upon RF. This is the sum of incoming current is equal to outgoing current. Nodal analysis at this point.
What is the I1? V1 upon R1. V1 minus 0 by R1. What is the I2? V2 upon R2. And what is the IN? Vn upon Rn. Vn upon Rn. Now you can write the V out is equal to minus Rf by R1 V1 minus Rf by R2 V2 minus Rf by R3 V3 and so on. Now if try to understand, if all R are equal, this is the actual answer. If all R are equal, this is cancel out and you will get V out is equal to minus V1 plus V2 plus V3 plus Vn. Actually it is the addition with negative sign, and that's why this is called inverting summer, because the phase shift is 180 degree. So if you are going to put the all R equal, Rf is equal to R, then V out will become minus V1 plus V2 plus V3 plus Vn, and this is the answer. ये आपका आंसर आ जाएगा. Okay. You can leave, no problem. Okay. ये है एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन. दिस इज कॉल्ड व्हाट? इन्वर्टिंग समर गाइस. इन्वर्टिंग समर. ओके देन सेकेंड थिंग, ये ना जो ऑपेम है ना, बेसिक लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट. व्हाट इज दिस? बेसिक लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट. तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई द सुपरपोजिशन थ्योरम. You can also apply the superposition theorem in this diagram. What is the superposition theorem? I'm going to explain you in this diagram. Superposition theorem also you can apply. पहले तो ऐसे निकाल लो KCL and so on. सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है वो समझो जरा. उसका डायरेक्ट भी लिख लोगे. ये देखो, सुपरपोजिशन मीन्स व्हेन वी आर कंसीडरिंग द V1, V2, V3, V4 ऑल बिकम 0. तो सुपरपोजिशन थ्योरम, the output is V01 plus V02 plus V0n. Okay. So first of all, make all the 0. Only consider the V1. So this is a very interesting diagram, guys. Right, watch this. This is a very, very interesting one. We are making the V20, V30, Vn0. This is the R1 and Rf is connected. Now all the registers are connected here. This is 0, V20, V30, Vn0, all are 0. And so on. So my dear friends, this is ground. According to virtual short concept, this is 0, this is 0. Now, what is the role of all these resistors? Nothing. Why? This voltage is 0, this voltage is 0. What is the current 3, R3, R4, R2? Everyone tell me. Virtual short concept, this is 0, this is 0. So what is the current through the R2, R3, R4? 0. To remove this resistor, it is a simple inverting op-amp. Means if you are getting the any current I, the same current will flow here, or you can apply the KCL at this point. If you are going to KCL, so what is the current here? 0. It is just like an inverting operational amplifier. 0 minus V1 upon R1 plus 0 minus V0 upon RF is equal to 0. No need to consider the R2, R3, R4 because all are connected in parallel. But what is the current? 0. And you will get V01. This is the V01.
minus RF by R1 into what? V1. Minus RF by R1 into V1. Simple. Minus RF by R1 into V1. Similarly, you can find the V02. What is the V02? Minus RF by R2 into V2. What is the V03? Minus RF by R3 into V3. What is the V0N? Minus RF by Rn into Vn. And that is called what? Superposition theorem. So one by one we can consider, or in a straightforward you can write the answer for this question. Straightforward. No need to write all this. Directly you can write V out is equal to, because of the first one, minus RF by R1 into V1. Because of the second one, minus RF by R2 into V2. Minus RF by R3 into what? V3, and so on. Minus RF by Rn into Vn. This is called superposition theorem. ये देखो, जो स्टेप हमने इधर से करंट इक्वल किया था उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो. देखो ये वाला स्टेप, उसके बाद तो वही है. ये वाला स्टेप यहां तक लाने के लिए जो करंट इक्वेट किया था, यू कैन अप्लाई द सुपरपोजिशन थ्योरम. इज इट क्लियर? इसलिए बोलते हैं इसको बेसिक लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड चिप आईसी, बेसिक लीनियर इंटीग्रेटेड चिप. तो दैट्स व्हाई वी कैन अप्लाई द सुपरपोजिशन थ्योरम. ये सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो इसको. और बहुत ये क्वेश्चन आ गया था, पता है आपको? यही क्वेश्चन आया हुआ था. ऐसा क्वेश्चन था, 2 रजिस्टर बस दिया हुआ था, एक को ग्राउंड कर दिया, बताइए क्या आंसर होगा. मतलब क्वेश्चन कैसा है देखो, इसकी थ्योरी पर ही बेस्ड क्वेश्चन था. ऐसा थ्योरी पर ही बेस्ड ऐसा क्वेश्चन आ गया, बताइए. 1 मार्कर क्वेश्चन किसी इसरो वगैरह में आया था. Tell me what is the gain of the system, everyone. ये क्वेश्चन था. Ideal op-amp, find V0 by Vs. If nothing is mentioned, again it is a ideal op-amp. Find V0 by Vs. So is there is any need to consider this resistor? Is there is any need to consider this resistor? R2? No. No need. Minus RF by R1. Finished. तो इसको नहीं करना है. What is the 0 0 0 0? What is the current through the R2? 0. No need to consider it. No need to consider it. Independent of R2. Gain is independent of R2. One minute. तो नो टाइम हो चुका है भाई, सॉरी. तो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. कल आएंगे नॉन इन्वर्टिंग समर. ये आपका काम है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना. नॉन इन्वर्टिंग समर, आई एम गिविंग यू द इजी वन. यूज द ऑल द रजिस्टर सेम, R1 R2 R3 इज इक्वल टू R. Only use the 3 registers 1 2 3 or RF and R1, and this is the non-inverting summer. Solve it. Just make it what easy. Solve it by using the, you can find the VP, then virtual short concept, same voltage here, then apply the KCL, and you can solve by any method, or you can also apply the superposition. Right. तो कल का असाइनमेंट भी हो गया. Now tomorrow we will going to start what very important concept, differential mode. A number of questions on this. Here we will discuss the differential amplifier, CMRR, AD, AC, and what instrumentation amplifier. So this topic is important, so don't miss the class, guys.
मिस तो वैसे भी नहीं करना है, ये सब क्वेश्चन बना, ये भी क्वेश्चन बनाना है ना, ये तो बना सकते हो, ये तो अभी आया था एमसीक्यू में। इसको ढंग से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है इन्वर्टिंग ऑप एम्प, ये है नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प, और दिस इज द समर। तो अभी तो समर मैंने आपको पढ़ाया ही है, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, समर, तीनों पढ़ चुके हो आप। तो बताइए व्हाट इज द, ये देखो अभी आया था, ये गेट में ही है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, शायद लास्ट टू लास्ट ईयर, ये 24 या 23 में। ओके देन ये तो ऐसा दिखता है, फिर उसके बाद सब आएगा, डिफरेंशियल मोड अलग आएगा, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो एंड सो ऑन, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, like this type of diagram. This is called the instrumentation amplifier. Tomorrow we will discuss. Okay then, thank you very much for attending the session guys. अच्छा लग रहा है शायद, hope you are also enjoying the session everyone. Sir, I have a doubt. क्या बोल रहे हो आप लोग? Sir, I have a doubt. Am I audible? Yeah, you are audible, बोलो. हाँ sir. Sir, in multi-stage gains, if we are connected, like gains in series, like first gain, let us consider first one is non-inverting amplifier, and second one is inverting amplifier. Okay. Then how to know that gain of the multi-stage? How to get the gain of the multi-stage? If the first one is the inverting op amp and the second one is the non-inverting op amp, or first one is the non-inverting and second is the inverting. Yes, any kind. You can find the gain like that ना. देखो ये तो ऐसा बना लोगे, एक मिनट रुक जाओ. For example, you are giving na like this. This is the first stage. This is the Vs, yes. Now the output of this become input for the second one. This is the case. Yo? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, na. This is the case. So first of all, always remember, first of all, find the voltage at this point. Right? But remember, never apply the KCL or nodal at this point. Are you getting my point? Never apply. तो कहाँ apply करना है? First of all, apply the at this node. So what is the virtual short concept? This is Vs. So what is the value? Vs. Apply the KCL Vs minus 0 by R1 plus Vs minus V0 1 upon Rf is equal to 0. Find the V0 1. You will get 1 plus Rf by R1 into what? Vs. Okay. Now, second time apply the nodal at this point. What is the nodal at this point? 0 minus V0 1 upon R1 dash, 0 minus V0 upon Rf dash, and then you will get the answer. Simple question. This point is clear? Yes, So sir. what is the gain of this? V0 upon V0 1, you will get minus Rf by R1. And you can directly multiply these two gain and you will get the answer. Because it is a cascading, the output of the first will become input for the second. अब यहाँ पर आप बोलोगे sir, why we are not applying the KCL at this point? Because when we are applying the KCL at this point, V0 1 minus Vs upon Rf, V0 1 minus 0 by R1 dash, you can write. But we have the current here. Yes or no? We have solved two questions. You have any idea about this current? No. When we are not having any idea about this current, never apply the KCL. If you want to find the current, then you can apply. Otherwise, if you want to find the gain, apply the nodal at this point, apply the nodal at this point only. Clear? Yes, yes, sir. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही डाउट कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर केवीएल लगा देते हैं और इस करंट को जीरो ले लेते हैं. इज दिस करंट इज जीरो? नो. वी हैव सॉल्व्ड द टू क्वेश्चंस. दिस करंट इज नॉट जीरो. तो यहाँ पे लगाओगे तो ये करंट के बारे में कहां से बता पाओगे? दिस पॉइंट. ओके, यही था ना डाउट.
क्लियर हुआ ना? Yes, इज sir. इट It's clear. Thank you. Yes, yes, क्लियर? sir. हाँ, ऐसा पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ओके देन, थैंक यू। अरे सबको मेरा लैंग्वेज तो समझ आ रहा है ना? ऑल आर कंफर्टेबल विद माई लैंग्वेज? हो गई नहीं तो फिर ओके देन, थैंक यू।